गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शतरुद्रसहितायां सप्तदशोऽध्याय नन्दिकेश्वरवाच। शृण्वतो गिरिशस्याध्या अवतारान् दशशङ्खचान् महाकालमुखान् भक्त्योपासनाकान् सेवितान् तत्राध्यो हि महाकालो मुक्तिप्रदासतां शक्तिस्त्र महाकाली भक्तिसिद्ध सिद्फलप्रदा तारनामादित्यक्षतारशक्तिस्तथैव सा भुक्तिमुक्तिप्रदोचो भो स्वसेवक सुखप्रदो भुवनेशो हि बालास्तृतीये परिकीर्तितः भुवनेशी शिवा तत्र बालाः वा सुखदा सतां श्रीविदेशा षोडशा श्रीवृद्ध्या षोडशी शिवा चतुर्थो भक्तसुखदो भुक्ति मुक्तिफलप्रदा पंचमो भैरवख्यात सर्वदा भक्तकामदा भैरवी गिरिजा तत्र सदुपासक कामदा छिन्मस्तक नामसो शिवा षष्ठ प्रकीर्तिता भक्तकामप्रदा चैव गिरिजा छिन्मस्तका धूमान सप्तमा शंभु सर्वकामफलप्रदा धूमावती शिवा तत्र सदुपासक कामदा शिवावतार सुखदो राष्ट्रमो बलकलामुखा शक्तिस्त्र महानंदा विख्याता बगलामुखी शिवावतारो मातंगो नवमा परिकीर्तिता मतंगी तत्र शर्वाणी सर्वकामफलप्रदा दशमा कमल शंभुर्भुक्तिमुक्तिफलप्रदा कमला गिरिजा तत्र स्वभक्तपरिपालिनी अतेष्यस्मिता शैवा अवतारा सुप्रदा भुक्तिमुक्तिप्रदा शैव भक्तानां सर्वदा सताम् अतेषे दश अवतारा हि शङ्करस्य महात्मना नानासुखप्रदा नित्यं सेवतां निर्विकारता एतदशावताराणां महात्म्यं वर्णितं मुने सर्वकामप्रदं ज्ञेयं तन्त्रशस्त्रादिगर्भितम् एतासामपि शक्तीनां दूतो महिमा मुने सर्वकामप्रदो ज्ञेयस्तन्त्रशास्त्रादिगर्भितः शत्रुमारन् कार्यादो ततच्छक्तिपरामता खलदण्डकरी नित्यं ब्रह्मतेजो विवर्धनी इत्युक्तास्ते मया ब्रह्मानवतारा महेशतो सशक्तिकादश्मिता महाकालमुखा शुभा शैव पर्वेषु सर्वेषु योधिते भक्तितत्पर एताख्यानं मलं सोति शम्भुप्रियो भवेत् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चस्वी क्षत्रियो विजयी भवेत् धनाधिपो हि वैश्य सयाच्छूद्रसुखमाप्नुयात् शाङ्करा निजधर्मस्था शृण्वन्तः क्षरतन्वितं सुखिना सयोर्विशेषं शिवभक्ता भवन्तु च इति श्रीशिवमहापुराणात् तृतीयायां शतरुद्रसहितायां शिव दशावतारवर्णन नाम सप्तदशोऽध्याय अथाष्टादशोऽध्याय नन्दीश्वर उवाच एकादशावतारान्वे शृण्वतो शङ्करान्वरान् यान् श्रुत्वा न हि बाध्या सत्यादसम्भवा पुरासरे सर्वे सुराशकमुखा दैत्यपराजिता त्यक्त्वा मारावतीं भीतया पलायन्निजां पुरीं दैत्यप्रपीडिता देवा जग्मुस्ते कष्पान्तिकं बद्धत्वा करान्तः स्कन्धा प्रणेमुस्तं सुविह्वलं सुनुत्वा तं सुरा सर्वे कृत्वा विज्ञप्तिमादरात् सर्वे निवेदयामासु स्वदुःखं तत्पराजयं तथा स कश्यपस्तात् तत्पिता शिवसप्तधी तदा कन्यामराकं वै दुःखितो भूतदाधिकं तानाक्षास्य मुनिसोऽथ धैर्यमाधाय शान्तधी काशीं जगाम सुकृत्या विश्वेश्वरपुरीं मुने गङ्गाभसी तथा स्नात्वा कृत्वा तं विधिमादरात्
विश्वेश्वरं समानर्च साम्बं सर्वेश्वरं प्रभुं शिवलिङ्गं संस्थापय चकार विप्लुं तपा शम्भुमुद्दिश्य सुकृत्या देवानां हितकाम्यया महान् कालो व्यतीयाय तपस्तस्य वै मुने शिवपादाम्बुजासत् मनसो धैर्यशालिना अथ प्रादुर्भूच्छम्भुर्भुरं दातुं तदर्शये स्वपदासक्तमनसे दीनबन्धु सतां गति वरं ब्रूहीति चोवाच सुप्रसन्नो महेश्वर कश्यपं मुनिशार्दूलं स्वभक्तं भक्तवत्सला दृष्ट्वा तं महेशानं स प्रणम्य कृताञ्जलि तुष्टाव कश्यपो हृष्टो देवतात प्रसन्नति कश्यपुवाच देवदेव महेशान शरणागतवत्सला सर्वेशा परमात्मा त्वं ध्याननगम्यो दयो व्यया बलनिग्रहकर्ता त्वं महेश्वर सतां गति दीनबन्धुर्दया सिन्धुर्भक्तरक्षन् दक्षदी अते सुरास्तत्विद्या हि त्वक्ताक्ष विशेषता दैत्यप्राजिताक्षाद पाहि तान् दुःखान् खितान् प्रभो असमर्थो रमेशोऽपि दुःखदस्ते मुहुर्मुहुः अतासुरा मच्छर्णा देवयन्तो सुखं च तदर्थं देवदेवेश देवदुःखविनाशका त्वत्पूरितां तपोनिष्ठां प्रसन्नार्थं तवासदं शरणं ते प्रपन्नोऽस्मि स्वर्ताहं महेश्वर कामं मे पूर्य स्वामिन् देवदुःखं विनाशय पुत्रदुःखैक्ष देवेश दुःखितोऽहं विशेषता सुखिनं कुरु मामीश सहायस्त्वं दिवोकसां भूत्वा मम सुतानाथ देवा यक्षपराजिता दैत्यर्महाबले शम्भो सुरानन्दप्रदो भव सदैवास्तु महेशान सर्वलेखसहायकृत यथा दैत्य कृता बाधा नाबाधेत सुरान् प्रभो नन्दीश्वर उवाच इत्युक्तस्य तु सर्वेशस्तथेति पृच्य शङ्करा पश्यतस्तस्य भगवांस्तत्रैवान्तर्दधेहर कश्यपोऽपि महाहृष्ट स्वस्थानं गमद्द्रुतं देवेभ्यः कथयामास सर्ववृत्तान्तमादरात् तथा स शङ्करा शर्वा सत्यं कर्तु स्वकं वच सुरभ्यं कश्यपाजज्ञ एकादशस्वरूपवान् महोत्सवस्तदासीदे सर्वं शिवमयं त्वभूत् संहृष्टासुरराक्षाथ मुनिना कश्यपेन च कपाली पिङ्गलो भीमो विरूपाक्षो विलोहितो शासता जपाद्भिर्बुन्ध्य शम्भुषण्डुभवस्तथा एकादशैत्य रुद्रास्तु सुरभितनया स्मृता दिवाकार्यार्थमुत्पन्ना शिवरूपा सुखास्पदा ते रुद्रा काश्यपा वीरा महाबलपराक्रमा दैत्याक्ष जघनुक्ष संग्रामे देवसहायकारिणा तद्रुद्र कृपया देवा दैत्या जित्वा च निर्भया चक्रुस्वराज्यं सर्वे ते शक्राद्या स्वस्थमानसा अद्यापि ते महारुद्रा सर्वे शिवस्वरूपका दिवानां रक्षणार्थाय विराजन्ते सदा दिवि एष्यानां यां पुरीते वासं चक्रे भक्तवत्सला विरमन्ते सदा तत्र नानालीलाविशारदा तेषामनुचरा रुद्रा कोटिष्परिकीर्तिता सर्वत्र संस्थितास्तत्र त्रिलोकेशभिर्भागशा इति ते वर्णितास्ताता अवतारा शङ्करस्य वै एकादशमिता रुद्रा सर्वलोकसुखावहा इदमाख्यानमं मलं सर्वपापप्रणाशकं धन्यं यशस्य मायुष्यं सर्वकामप्रदायकं य इदं शृणुयातात श्रावयेद्या समाहिता इह सर्वसुखं भुक्त्वा ततो मुक्तिं लभेत सा इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां रुद्रसहितायाम् एकादशावतारवर्णनं नाम 18 अध्यायः।